Hello everyone, my name is Pooja Wankhede and today we are going to learn a very interesting topic, that is simplex method. Okay, so there are many n number of methods to solve linear programming problems. Okay, the very first method is simplex method. As it is included in your syllabus, you can go through the books. Various examples are given for simplex method. So today we are going to learn about simplex method. There are other also methods are also there, like simplex method, two-phase method, and other types of methods are available, but today we are going to learn about simplex method. Okay, so first of all, let's learn about the basics of simplex method. What is meant by simplex method? What are the different kinds of things that are used in simplex method? Okay, so in simplex method, what is meant by simplex method? When decision variables are more than 2, we always use simplex method. Okay, so अगर डिसीजन वेरिएबल हमारे पास मोर देन 2 डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, यानी x y z ऐसे 3 वेरिएबल अगर होंगे या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, तो हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? सिंप्लेक्स मेथड. ओके, in simplex method there are two kinds of variables. Okay, so first variable is slack variable. When slack variable come in consideration, variable added to less than equal to constraint to convert it into an इक्वेशन. ओके, अगर हमें लेस देन इक्वल टू का कंस्ट्रेंट अगर दिया जाए, वो कंस्ट्रेंट को हमें इक्वल टू के कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट करना है, तो वी नीड टू ऐड स्लैक वेरिएबल. अ स्लैक वेरिएबल रिप्रेजेंट अनयूज्ड रिसोर्सेस. ओके, जो रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे हैं उसे हम स्लैक वेरिएबल कहते हैं. एंड स्लैक वेरिएबल का पिक्चर में आता है जब लेस देन और इक्वल टू के कंस्ट्रेंट्स होंगे. अ स्लैक वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूट्स नथिंग टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू. ओके, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू होता है उसमें वो कोई भी कंट्रीब्यूशन करता नहीं है स्लैक वेरिएबल. ओके, मींस स्लैक वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्या रहेंगे? 0 रहेंगे. ओके, now the second variable is surplus variable. When surplus variable is used, variable subtracted from greater than or equal to constraint to convert it to an equation. Okay, surplus variable यानी एक्स्ट्रा जो रहता है उसे हम surplus कहते हैं. तो surplus variable कब आएगा? जब greater than और equal to का constraint होगा. एंड जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसे हमें क्या करना होता है? ऑलवेज सब्सट्रैक्ट करना होता है in order to get a equation. Okay, a surplus variable represent an excess above a constraint requirement level. जो requirement level है उससे excess अगर होगा तो वो surplus variable होता है. Surplus variable contributes nothing to be calculated, nothing to the calculated value of the objective function. Okay, surplus objective is also equal to 0. Okay, now going further, what is meant by basic solution? Okay, if you are not understanding all this theoretical part, it's all right. We are going to take examples in upcoming slides. There I am going to explain all the things to you. Okay, so it is necessary to go through some of the basic theory. That's why I am taking this thing. Okay, so going further, what is meant by basic solution? The solution is obtained by setting any n variables. Okay, basic solution यानी solution which is obtained by setting any n variables among m plus n variables equal to 0 and solving for remaining m variables provided the determinants of the coefficient of this variable is नॉन जीरो. ओके, तो अभी वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे x y z या फिर m n, ये जो हम लेते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं. ओके, such m variables are called basic variables and remaining n0 valued variables are called as non-basic variable. Okay, this basic variable and non-basic variable I will going to explain in example that we are going to take. Okay, basic feasible solution. What is meant by basic feasible solution? It is a basic solution which also satisfies the non-negativity restriction. Okay, basic feasible solution means what? It is a basic solution which also satisfies the non-negativity restriction. अभी देखो हमारे पास जो भी resources available होंगे, resources यानी क्या होता है? man, money, power, then man power, money, all these resources are always available in the positive form. Negative resources हो सकते हैं क्या? कभी negative resources हो नहीं सकते हैं. तो हमें जो restriction आता है वो क्या है? Negativity restrictions
हमें आते हैं. ओके, तो गोइंग फर्दर, what is basic feasible solution? Okay, basic feasible solution are of two types. Okay, degenerate basic feasible solution. What is meant by degenerate basic feasible solution? If one or more basic variables are zero. Okay, basic variable अगर one or more basic variables जो अगर zero होंगे तो हम उसे degenerate basic feasible solution कहेंगे. Non degenerate basic feasible solution, all basic variables are non-zero. Okay, so all basic variables are non-zero, तो हम उसे क्या कहते हैं? non degenerate basic feasible solution. Okay, going further, what is meant by optimal basic feasible solution? Basic feasible solution which optimizes the objective function. Okay, so हमारा basic objective क्या होता है? हमें क्या करना है कि जो हमारा basic feasible solution है उसको हमें क्या करना है? ऑप्टिमाइज करना है. ओके, so we are going to learn about this optimal basic feasible solution. Okay, so what is the example of, so going further we are going to take two examples on this simplex method. If it is not understandable, we will going to take another few example about this. Okay, so very first example of simplex method, as you can see in the slide. Okay, so we need to maximize z is equal to 13x1 plus 11x2. Okay, and here we are going to get the subject to constraints. Okay, there are three constraints are given, that is 4x1 plus 5x2 which is less than or equal to 1500, 5x1 plus 3x2 which is less than or equal to 1575, x1 plus 2x2 which is less than equal to 420, and where we are as I said earlier that resources are never going to be negative. Okay, so here our resources are x1 and x2. Okay, so this x1 and x2 should not be equal to 0. Okay, so x1 as you can see in the fourth constraint, it is x1 and x2 which is always greater than or equal to 0. Okay, हमारे जो resources होते हैं वो either equal to 0 होंगे और greater than 0 होंगे. Okay, so यहाँ पर देखो हमारा objective function कौन सा होता है? Objective function is maximize z is equal to 13x1 plus 11x2. ये जो है maximize z is equal to 13x1 plus 11x2, ये हमारा objective है. एंड हमें जो तीन constraint दी है वो मैंने बताया है, जैसे 4x1 plus 5x2 which is less than or equal to 1500, 5x1 plus 3x2 which is less than or equal to 1575, x1 plus 2x2 which is less than or equal to 420. These are the three constraints which are given to us. Okay, so if you remember in our first slide we have discussed about this variables, like if there is less than or equal to, then we should use their slack variables. Okay, so what is meant by that slack variables, that we will learn in the next slide. Okay, going further, okay, we need to optimize this solution, maximize z is equal to 13x1 plus 11x2. Okay, solution. Step 1, convert all the inequality constraints into equation by the use of slack variable. Why we are using here slack variable? Because in constraints we are given that less than or equal to constraints are given. Okay, so that's why we are using here slack variable. Okay, always remember less than or equal to means we are going to take slack variables. Okay, slack variables okay, so step 1 is convert all inequality constraints. हमारे जो inequality constraint जो है, तीन constraint से हमारे पास ये inequality मतलब less than or equal to के फॉर्म में है, तो उसे हमें क्या करना है? equalities में कन्वर्ट करना है. और उस equalities में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? by the use of slack variable. अभी देखो ये slack variables क्या होते हैं, तो हम slack variables जो है वो S1, S2 and S3 इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं. तो देखो अभी यहाँ पर हमने तीन S1, S2 and S3 ये तीन स्लैक वेरिएबल क्यों लिए हैं? क्योंकि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स है तो वो थ्री कंस्ट्रेंट्स हमारे पास अवेलेबल है. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन थ्री स्लैक वेरिएबल्स. ओके, सो going further, okay, introducing this slack variable into the inequality constraints and rewriting the objective function. Okay,
सो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सच दैट ऑल वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन मॉडल कैन री रिटर्न एज। ओके, सो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, हमें इनइक्वालिटी जो कंस्टेंट्स होती है उसमें स्लैक वेरिएबल्स हमें उसमें इंक्लूड करने। तो स्लैक वेरिएबल्स जो है यहाँ पे हमारे पास 3 कंस्टेंट्स है, इसलिए हमने 3 स्लैक वेरिएबल्स लिए हैं, S1, S2 एंड S3। एंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जैसे कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 13x1 प्लस 11x2, तो यहाँ पे जो हमारे जो वेरिएबल्स है 13x1 एंड 11x2 उसे हमें क्या करना है, उसे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे 13x1 प्लस 11x2 है, तो वो अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। जैसे कि देखो उसे हम री रिटर्न कर सकते हैं z माइनस 13x1 माइनस 11x2 विच इज इक्वल टू 0। एंड जो हमारे जो 3 कंस्टेंट्स है उसको लेस देन और इक्वल टू के फॉर्म में है, तो ये 3 कंस्टेंट्स को हमें इक्वालिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे। तो स्लैक वेरिएबल अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे जो बेसिक 3 कंस्टेंट्स है तो वो किस तरह कन्वर्ट होंगे, तो देखो एज 4x1 प्लस 5x2 विच इज लेस देन और इक्वल टू 1500 है, तो इसे हमें इक्वालिटी केस में करना है। तो हम क्या करेंगे, 4x1 प्लस 5x2 प्लस S1 जो है वो हमारा स्लैक वेरिएबल है, और इसे हमने अभी क्या किया, स्लैक वेरिएबल ऐड करके इक्वालिटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो विच इज इक्वल टू 1500। ये हमारा हो गया फर्स्ट कंस्टेंट। गोइंग फर्दर फॉर सेकेंड कंस्टेंट, 5x1 प्लस 3x2 प्लस S2 विच इज इक्वल टू 1575। ओके, यहाँ पे दिया है देखो 5x1 प्लस 3x2, अभी ये लेस देन इक्वल टू को हमें इक्वल टू में करना है, तो यहाँ पे हम स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे जो है S2। अभी थर्ड कंस्टेंट में x1 प्लस 2x2 विच इज लेस देन और इक्वल टू 420 है, तो इसे भी हमें इक्वल टू के इसमें करना है, तो x1 प्लस 2x2 एंड थर्ड कंस्टेंट है इसलिए हमने यहाँ पे S3 थर्ड स्लैक वेरिएबल S3 वहां पे ऐड किया विच इज इक्वल टू 420। और जैसे मैंने बताया कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होते हैं, वो कभी भी निगेटिव नहीं होंगे। तो हमें अभी देखो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x1 x2। यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता देती हूँ आपको, नीचे जो सबसे लास्ट लाइन है उसमें है x1 x2 S1